Joining videos. Did you all fill your assignment? Good morning, ma'am. Did you all complete your assignment? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. जमा भी कर दिए. Today was the last date, right? No, No, ma'am. ma'am. Time was extended, ma'am. 31 January. Okay. Good morning, ma'am. Morning. मैम आपका YouTube पे मैम प्लेलिस्ट नहीं बनाई है मैम. बहुत वीडियो नहीं मिलता है मैम. Video तो सारा जाता है. Is there any specific video that you're seeking for? In that case, I'll send you that link. कोई इशू नहीं है. अगर पिछले 4-5 क्लासेस का लिंक चाहिए तो हम भेज देंगे. मैम पिछले 4-5 क्लास का नहीं चाहिए. जो पीछे हम क्लास ही नहीं किए हैं, 1 महीना या 1.5 महीना क्लास नहीं किए हैं. स्टार्ट का चाहिए तुमको? यस मैम. ठीक है, I'll see. या मैम प्लेलिस्ट बना दीजिएगा ना एक बार, तो वो इजी रहेगा मैम. Okay, okay. Shall we settle down first? We will start with, see, in the last class, मैम एक क्वेश्चन था. मैम ये कैरिस्मेटिक अथॉरिटी फिर से समझा. please mute yourself. हाँ बोलो सोनाली. मैम कैरिस्मेटिक अथॉरिटी फिर से समझा. Charismatic authority. Charismatic authority का मतलब होता है, charisma का मतलब समझते हो? That person has a lot of charisma. मतलब तुमको एक बहुत जनरल लैंग्वेज से समझाते हैं. सलमान खान, ठीक है? सलमान खान बहुत बड़ा एक्टर है, वो एक बात होगी, वो that will be a matter of debate. कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छी एक्टिंग है, but he has a lot of charisma in his personality, and this is also the reason people follow him blindly. ये होता है कि नहीं? बहुत अच्छी मूवी नहीं होने के बावजूद there is some amount of charisma in his personality, और इसीलिए उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं. शाहरुख खान के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? Yes, ma'am. While on the other hand there are people who are probably better actors than Salman Khan and Shah Rukh Khan, like Rajkumar Rao, or you know other actors who are actually actors, लेकिन शायद उनके फॉलोअर्स उतने ज्यादा नहीं है. उनका फैन फॉलोइंग वैसा पागलों जैसा नहीं है. इसको कहते हैं करिश्मा. यू हैव सम काइंड ऑफ करिश्मा, यू हैव एन ऑरा अराउंड योर पर्सनालिटी. इस ऑरा, इस करिश्मा की वजह से पीपल दे चूज यू द लीडर, ठीक है? दे ऑटोमेटिकली कंसिडर यू द लीडर एंड दे कंसिडर देमसेल्व्स एज द फॉलोअर. इस करिश्मा, ये भी एक लीडरशिप की बात होती है. जैसे यू नो इन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, like there's a person who has a lot of charisma in his personality, a lady or a man, but probably वो इतना competent नहीं है. That person is not that competent. जैसे अभी तुमको मूवी का एग्जाम्पल लेके हम समझाए, जरूरी नहीं है कि the actors that I am naming, like Rajkumar Rao, these are you know underspoken actors, but they are better actors than, they could be better actors than Salman Khan or Shah Rukh Khan in certain movies, लेकिन उनका fan following वैसा नहीं है. लेकिन on the other hand, अगर कोई भी न्यूज आ जाए या फिर you know, तुम समझ रहे हो कि नहीं, न्यूज आ जाए या कोई कोर्ट केस की बात हो, जस्ट लुक एट हाउ इंडिया फॉलोज हिम. तो ये एक करिश्मा होता है कि यू हैव दैट करिश्मा, यू हैव दैट ऑरा इन योर पर्सनालिटी, जिससे पीपल गेट ब्लोन अवे बाय योर पर्सनालिटी. इस तरीके, हाँ, क्रेज होना. करिश्मा मतलब एक काइंड ऑफ जादू होना तुम्हारी पर्सनालिटी में. यू आर लाइक्ड बाय मेनी पीपल, लोग तुमको पसंद करते हैं. So this is also one reason. That's mean blindly follow to someone. That's Blindly भी नहीं बोलोगी. charismatic personality यानी you have that charisma, you can connect with people. तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे लोग blown away हो जाते हैं. इस तरह की जो लीडरशिप है, उसको मैक्स वेबर ने कहा कि इस तरीके की लीडरशिप जो होती है, दिस इज कंप्लीटली इमोशनल, दिस इज बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स. और ये सही भी है. हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उसके बारे में गलत नहीं सुनते हैं, हम उसके बारे में you know there is a kind of emotion attached with that person, right? Yes, ma'am. Yes, we try to defend that person always. This is one thing.
तो उन्होंने बोला कि रैशनल लीगल अथॉरिटी के अलावा कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी और जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, ये दोनों ही चीजें दे आर नॉट valid for the organization for a bureaucratic management. Rather, it will be better if the organization structure is based on rational legal authority. Thank you, ma'am. Now, we're done with classical theory in the new classical theory in the last class. अब थोड़ा सा तुम लोग एक डिस्कशन करो और बताओ न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या थी. थ्योरी का नाम नहीं बताना, वो मुझे पता है कि थ्योरी का नाम सबको मालूम है. ये कैटेगरी क्या था. आज क्लासिकल थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पहले यू टेल मी व्हाट वाज न्यू क्लासिकल थ्योरी अबाउट. डू यू रिमेम्बर एक चार्ट बनवाए थे जब आपका ऑफलाइन क्लास हो रहा था, तो अप्रोचेस टू मैनेजमेंट में. Yes, ma'am. उसमें पहला कैटेगरी यही था, न्यू क्लासिकल अप्रोच. तो न्यू क्लासिकल अप्रोच हमने खत्म किया. व्हाट वाज न्यू क्लासिकल अप्रोच? Ma'am, recognition of the importance of human element. Sonali, this is the most wrong answer you could ever give. ह्यूमन एलिमेंट तो कहीं था ही नहीं न्यू क्लासिकल में, कहीं भी नहीं था. इसीलिए तो इसको क्रिटिसाइज किया गया. रोहित. Yes, ma'am. Ma'am, What is- human except of industry. फिर से बोलो. Human aspect of industry. I did not get your answer. ठीक से बोलो. Human aspects. ह्यूमन Of- एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री. नो, तुम सोनाली का सुन के बता दिए. बिट्टू. Actually, we deal in the human relation प्रत्युष. industry. Yes, ma'am. What was न्यू क्लासिकल थ्योरी बेस्ड अपॉन? क्या थी इस थ्योरी में? तीन थ्योरी पढ़े ना. Proper delegation of authority. ठीक है, आप लोग पॉइंट्स बता रहे, मोटा मोटी क्या समझे इस थ्योरी के बारे में. ये जो कैटेगरी था न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट, इसके बारे में क्या समझे? नो, आई वांट एन आंसर. द क्लास कैन नॉट प्रोसीड लाइक दिस. आप लोग रोज क्लास ज्वाइन करते हैं और पीछे का एकदम फॉर्मेट मार देते हैं. ऐसे कैसे होगा? सोनल. Just 1 or 2 line about what is new classical theory. क्या थी थ्योरी? ये जो तुमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी, हेनरी फेयल की थ्योरी पढ़ी, मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ी, सब इसमें इसका क्या मतलब था? सब थ्योरीज में क्या कॉमन था? सर आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन को मशीन की तरह सोच रहा था. हु सेड? कृष्णा सेड. यस मैम. टू एन एक्सटेंट. ओके, ठीक है, तुम्हारा आंसर एक्सेप्टेबल है. नैन्सी. हाँ नैन्सी बोलो. Nancy has raised her hand. Tell me, Nancy. This is what happens in. दो तीन जगह बात कर ले छिए पहले. चलो. यस मैम. हाँ बोलो. मैम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तरफ फोकस नहीं है. Very good. This is also one point that came out of this theory. New classical theory में external environment की तरफ कोई फोकस नहीं है. और ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज सिस्टम की तरह कंसीडर किया गया है. Very good. Very very good. अजीत. यस और इसमें सिर्फ मैनेजमेंट लेवल को ही देखा गया है मैम, कि मैं हाउ डज मैनेजर्स ये मतलब मैनेजमेंट किस तरह से सुधारा जाए या फिर उसे किस तरह से चलाया जाए, सिर्फ मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है मैम. साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैनेजर देखा गया था. साइंटिफिक मैनेजमेंट उसमें था मैम थोड़ा सा, मगर कहा तो यही जा रहा है कि उसमें मैनेजर्स मगर ये सॉरी पॉइंट ऑफ तो मैनेजर्स को ही कर रहा है ना मैम. उसमें था मैम ये वर्कर्स को पार्टिसिपेंट के लिए था, बट पॉइंट आउट तो मैनेजर को ही कर रहा है मैम. नो,
शिरीन, यस मैम। मैम ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज्यादा वास्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस डालते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं चलाने की। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। ठीक है, देखो, सिंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट, जिसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहा जाता है। बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या था? कुछ लोगों ने, आपने सही पॉइंट बताया, उसी को कलेक्ट करके हम बताते हैं। न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट का मतलब होता है, ये तीनों थ्योरीज जब आप पढ़े होंगे, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं मिली होगी। There was no discussion about any kind of external environment, which means that all these new classical approach to management believed that there is no relationship of, there is no, impact on the management of an organization according to the external environment. जबकि ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, there were always talks about rules and regulations, strict rules and regulations. Now, strict rules and regulations किस तरीके के organization का structure होता है? Very strict rules and regulations which cannot be, which is not flexible. It has to be followed by people, is a feature of formal organization. यानी न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह प्रोजेक्ट किया है? एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट विथ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The other thing about new classical approach is that it has not talked about certain other features like human relations. आप ऑर्गेनाइजेशन में बिना ह्यूमन रिलेशन के बात किए हुए ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं सकते। देयर इज नो मेंशन और नो टॉक अबाउट ह्यूमन रिलेशंस कि लोगों में इनफॉर्मल रिलेशन भी बनती है। इनफॉर्मल, सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन ही नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन which directly has impact on the morale and ultimately on the productivity of the organization. इसी सारे criticism को, when we proceed further towards classical approach to management, we see that इन्हीं सारे loopholes को correct करने की कोशिश की गई classical approach to management में। Now you all understand the difference between new classical approach and classical approach? New classical approach समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This was new classical approach. Now, what was corrected by human relations approach or new classical approach? आप लिख लीजिए, start कीजिए। Classical approach to management. Ma'am, repeat again. Classical approach to management. Sorry, new classical approach. Classical we have done. Now we'll start with new classical approach to management. New classical approach को human relations approach भी कहा जाता है। Oblique देके लिख लीजिए, confuse मत होना। New classical approach to management or human relations approach. Human relations approach. There were three theories that we studied in classical approach. There will be just one theory that we will study in new classical approach. इस experiment का नाम है Hawthorne experiment, ठीक है, HAW
Write down. HAWTHRONE, Hawthorne experiment. Okay. Father of human. Acha, tell me, who's the father of scientific management theory? F.W. Taylor. Who's the father of who's the father of administrative approach? Henry Ford. Henry Ford. Who's the Henry father Ford. of bureaucratic management? Max Weber. Max Weber. Max Weber. Similarly, the father of human relations approach will be Elton Mayo. Write down. ELTON, Elton Mayo, MAYO. Elton Mayo. Father of human relations approach will be Elton Mayo, because he was the pioneer towards talking about the value of people and the value of informal organization in a formal structure. He was the first to focus on the human relation or defining the use of human for the first time in the organization. अभी तक कोई भी human element की, यानी कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अप्रोच में आप देखते जाएंगे कि ह्यूमन के ऊपर वैल्यू बढ़ गया है, और जो क्लासिकल अप्रोच था उसमें ह्यूमन के ऊपर बहुत वैल्यू नहीं था. उनको ऐसा लगता था कि जिस तरीके से भी मन हो ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ही बल पे वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं. लोगों का कोई खास यूज नहीं है, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं. So neoclassical approach to management or human relations approach, the father of this theory is Elton Mayo, and the experiment that he conducted is Hawthorne experiment. This experiment is extremely important. कोई भी competitive exam होता है, Elton Mayo के experiment से एक question रहता ही रहता है, ये ध्यान रहेगा. जब भी आप अपने मैनेजमेंट बेस्ड डिग्री के लिए एग्जाम देने जाएंगे, देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन ऑन एल्टन मायो एक्सपेरिमेंट, अगर ओबी का ये क्वेश्चन रहा तो. नाउ because the theory that he gave was very important, and it laid the foundation for further researches and development of humans in the organization. क्या किया इस थ्योरी ने? न्यू क्लासिकल अप्रोच. जहां हम बात करते हैं कि क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट लेड मोर फोकस ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू क्लासिकल अप्रोच फोकस्ड मोर ऑन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and considered human factor as one of the most defining factors of productivity in the organization. He laid a lot of stress on informal grouping. He laid a lot of stress on informal communication. देखिए ये थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपका क्लास है PGDM का and you are 28 students in the class. Now आपका क्लास अच्छा है, किसी टीचर को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सिर्फ एक दो बंदे से तो डिफाइन नहीं होता है. When we say that PGDM is a good batch, or we say that PGDM is not a good batch, it is never because of just one person, right? This is always because of the class on whole, and this is also dependent upon the informal communication. जैसे efficiency आप समझिए. For example, I tell you that you have an informal communication, an informal relationship in class. जैसे if I say something to Satyam, because he is the CR of the class, he will convey it to the rest of the people, right? Am I audible? आवाज आ रही है? मैम आवाज स्टक हो गया था. अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ. Yes. See,
What I was saying that कि सत्यम is the CR of class. जब मुझे अगर कोई मैसेज देना है कि I'll take that mark you, I'll drop it in group, but there are other things that I convey to Satyam, thinking that he will convey to the entire class, right? This is a form of informal communication. लेकिन इससे भी काम होता है कि नहीं होता है? होता है? Yes, ma'am. This speaks about your informal group in the organization. उसी तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आप ऐसे देखिए, आपको कॉलेज का ही एग्जाम्पल लेके बताते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप का वैल्यू. वी आर ऑल फैकल्टीज. अगर ऑर्गेनाइजेशन में 40 फैकल्टी हैं समझिए, ठीक है, 40 फैकल्टी हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है कि क्लास में भी आप ये देखते होंगे कि किसी के साथ आपका रिलेशन ज्यादा अच्छा है, राइट? किसी के साथ आप ज्यादा फ्रेंडली हैं, किसी के साथ थोड़े कम फ्रेंडली हैं, किसी के साथ आपकी बस बातचीत होती है, किसी के साथ आपकी बातचीत ज्यादा नहीं होती है. इट्स जस्ट हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, दैट्स इट, दैट दे बिलोंग टू योर क्लास. सो सिमिलरली इनफॉर्मल रिलेशनशिप ऐसा ही होता है. Among faculties also, there are some people जिनसे कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम है, कैन यू मैनेज माय क्लास? ठीक है. और ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप की ही इंपॉर्टेंस होती है कि पीपल आर विलिंग टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. समझ में आई बात? सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सोनी मैम टुक योर क्लास व्हेन आई वाज नॉट देयर. I asked her कि मैम आप मेरा क्लास रिप्लेस कर लीजिए, I'll be on leave. So she happily said that okay, I'll take your class. Is this not an example of informal relationship? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ये मैनेजमेंट से डायरेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन अगर इनफॉर्मल रिलेशनशिप को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इस पे रिसर्च वर्क करेंगे, you will find that overall morale that you have for the place, the attitude that you have for your workplace will increase, and this will eventually lead to more productivity. Okay, जैसे मोरल का क्या मतलब होता है? जैसे कि the overall attitude that you have for this place. Like आप CIMAGE College भी आते होंगे, आप जब क्लास करने के लिए आते होंगे, you must have perception about things. आप क्लास के बारे में कुछ सोचते होंगे, पर्टिकुलर टीचर के बारे में सोचते होंगे, गुड, बैड, एवरेज, व्हाटएवर. आप क्लास से कितना सेटिस्फाइड है, नहीं है, किसी टीचर के कोऑपरेशन से है, the overall management that you can see in the college, the overall takeaway that you have from this college. So this all cumulatively builds up your morale. Similarly, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, there are a lot of factors, especially the informal ones, that make us build that morale of that place. ये morale high रहेगा, यानी if we feel positive about the workplace, this will improve productivity. अभी आप ये सोचेंगे as a student कि ऐसा थोड़ी होता है. अगर मेरा काम है तो उससे मुझे क्या मतलब है कि बगल वाले से मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही. मुझे अपना काम है, मैं अपना काम करके सैलरी लेके आ जाऊंगी या आ जाऊंगा. बट ऐसा नहीं होता है. This will put down your morale, this will put down your productivity, and the overall efficiency of the organization goes down. इसी को एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया हॉथरॉन ने. हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया एल्टन मायो ने. एल्टन मायो कंडक्टेड 4 एक्सपेरिमेंट्स. 4 एक्सपेरिमेंट किए थे एसी के अंदर, और अलग अलग फैक्टर्स को कंबाइन करके जो रिजल्ट निकला था वो उसको एक जगह पे उन्होंने they just collected it and gave the principles of Hawthorne experiment. Understood? Yes, ma'am. Write down few lines about this. This is an important experiment, that is why I'm giving you in writing. Write down. The human relations movement began with the Hawthorne experiment.
मूवमेंट के बाद क्या बोले मैम? The human relations movement began with the Hawthorne experiment. They were conducted at Western Electrical Works. कंपनी का नाम है. They were conducted at Western Electrical Works in USA between 1924 to 32. 8 साल ये एक्सपेरिमेंट चला था. Between 1924 to 32. It was conducted by Elton Mayo and two more contributors. एल्टन मायो And two more contributors. इस एक्सपेरिमेंट में और 2 लोग थे उनके साथ. And two more contributors. This experiment was conducted in 4 phases. This experiment was conducted in 4 phases. Number 1, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स का नाम ठीक से लिखिएगा, ये एग्जाम में जरूर आता है. Number 1, illumination experiment. Illumination experiment. ये बड़ा एक्सपेरिमेंट है, एक क्लास में खत्म नहीं होगा. Illumination experiment. Second, relay assembly. Okay, you just write an experiment. I'll explain it to you later. Write down illumination experiment में लिखिए. Experiments to determine the effect of changes effect of changes in illumination on productivity. Experiments to determine the effect of changes in illumination on productivity. Next, relay race समझते हैं, right? Relay assembly test room experiment. मैम क्या था? Relay assembly test room experiment. Relay assembly test room experiment. Okay. Experiments to effect of changes in hours. उसको मैं फिर से एक बार पढ़ देगा.
experiments to determine the effect of changes in hours, ghanta, HOURS, in hours and other working conditions on productivity. ये हम लोग डिस्कस करेंगे तब और elaborate पढ़ेंगे. And other working conditions on productivity. Ma'am, and other working conditions on productivity. Done. Next, next, bank wiring, bank, 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 bank wiring, observation room experiment. Bank wiring, observation room experiment. इसके डिस्क्रिप्शन में लिखो. Determination and analysis of social organization at work. Social organization at work. Social organization at work. Done writing? Yes, ma'am. Last लिखो. Mass interviewing program. Mass, MASS, mass interviewing program. Write down. About 21,000 workers were interviewed. About 21,000 workers were interviewed to determine. Ma'am, फिर से repeat. About 21,000, 21,000 workers were interviewed. 21,000 workers का इंटरव्यू हुआ था. Interviewed to determine workers' attitude and sentiments. And sentiments. Bracket में लिखो. Welfare provisions and facilities provided to the employees. Welfare provisions and facilities provided to the employees. Welfare provisions and facilities provided to the employees. Done? Yes, ma'am. हाइपोथेसिस समझते हैं आप लोग? Just like the assumption theory. That is assumption. It's not like, it is actually assumption. ठीक है? Hypothesis का मतलब होता है assumption. See,
इस एक्सपेरिमेंट को, ये एक्सपेरिमेंट आप ध्यान से सुनिएगा, और it is because this experiment is very important. I've already told you that ये आपके एग्जाम में भी आएगा, आता ही है। और दूसरी बात है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो वहां पे भी ये इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। फाइन, लेकिन यू डू वन थिंग, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, लेकिन इसके पहले आप ये समझिए कि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव क्या किया। We are studying it under neoclassical approach to management, right? Which is also being called human relations approach, right? So what did this theory prove? हम जब इसको human relations approach में पढ़ रहे हैं, what is this theory actually trying to prove, or what did it pave the way for? The first thing is, write down. आप इस theory को, इसको bracket करके रख लो। ये theory अभी, ये लास्ट में ये theory समझाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि ये framework को इसको prove किया इस theory ने। You write down the first thing. Neoclassical approach to management ने क्या prove किया? Write down. Neoclassical approach to management मैम रिपीट एक बार कर दीजिएगा, रिपीट एक बार। Neoclassical approach to management, neoclassical approach to management modified the classical approach in the following ways. Modified the classical approach in the following ways. First point, bullet points में लिखते जाओ। Organization is a social system. Repeat, ma'am. Organization is a social system. What is the meaning of organization as a social system? Let's discuss this point in this class. ये theory, ये classic neoclassical approach में ये सारी चीजों को rectify किया गया, which we cannot see in classical approach. So what according to you is a social system? Society क्या होती है? क्या society का हमारे ऊपर impact नहीं होता है? होता है। Yes, हमारा भी society के ऊपर impact होता है. This is how we live in society. We are affected by each other. Similarly, Elton Mayo said that organization is also a social system. This is kind of society. This is a social system where people are working, people interact with each other, and this has an impact on productivity. Social system का ये मतलब हुआ. Okay. Second point, workers' behavior is dominated by the informal group of which he is a part. What is formal and informal group? You understand this? Yes, ma'am. बताओ, कोई एग्जांपल देके क्लियर करो इसको, जिससे हमको लगे कि तुम लोग को समझ में आता है. Formal groups, those just like that, those people who are just connected with the organization or just sharing their जैसे हम लोग का PGDM 21-23 फॉर्मल ग्रुप है, और जो हम लोग का अपना पर्सनल ग्रुप है वो इनफॉर्मल ग्रुप है. वेरी गुड. अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर लो, have you heard of the fact कि when you work in an organization there is a cultural club, there is a sports club in the office. आपने देखा है कि ONGC का एक क्रिकेट टीम भी है, ये सब होता है, मालूम है.
आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, जब when you go to good organizations, you have informal gathering, you have cultural club, fine, you have you have a badminton playing court, ठीक है, you have a carom playing group. सो उसमें कोई आपको फोर्स नहीं करता है, द फैक्ट दैट, और लेकिन मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला है ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, एंड देयर आर 7 people in a group, 7 people in a team. There's a difference between group and team. I'm just making you seamless right now, but when we proceed towards OB, I'll explain you what is the exact difference between team and group. As of now, you just understand that suppose there are 7 to 8 people in a team, fine. This is a formal group because this has been given by the management. This group has been built by the management. But आप cultural club में जाते हैं voluntarily, and there are other people also coming and joining that cultural group. You happen to be, you happen to be friendly with few of them. This is known as informal group. The kind of group that you have when you go to canteen at the same time and you meet the same person, आप उससे बार बार मिल रहे हैं और उसकी वजह से जो दोस्ती हुई, that is an informal group, right? आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके बगल में जो बंदा बैठता है या बैठती है, you happen to be getting along with that person more well, that is an informal group. अगर 3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप बन जाता है. For example, if you this is about the informal group, fine. If we talk about this college, you can understand that there are some teachers who are put in management, right? There are 2 different departments. One is the IT department and the other one is the management department. Now, people who are recruited and put in management, this is a formal group. This management department is a formal group. But even in this management department, we happen to get along with few people more nicely than others. It happens. This is informal group. Okay, and this informal group, to your surprise, adds a lot to the productivity of the organization, जिसकी कोई चर्चा क्लासिकल अप्रोच में हुई ही नहीं. किसी ने क्लास स्टार्ट होने के पहले बोला था कि पीपल आर ट्रीटेड लाइक मशीन्स. ये साइंटिफिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो पीपल आर ट्रीटेड लाइक मशीन्स, पीपल वर ट्रीटेड लाइक मशीन्स, लेकिन उसको थोड़ा सा करेक्ट किया गया हेनरी फ्योल में कि पीपल वर नॉट ट्रीटेड लाइक मशीन्स. लेकिन हाँ, ही ऑल्सो बिलीव्ड कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो हम किसी भी टाइप के लोग को मैनेज कर लेंगे. ही कंप्लीटली बिलीव्ड कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से हो जाएगा. लेकिन जो हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच देखते हैं, इसका मतलब ये होता है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होता है. The organization should move forward to building informal organizations also, informal groups in the organization also. This is beneficial for the organization also. आपने ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिजनेस कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़े होगे. यस मैम, अभी चल ही रहा है. उसमें ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन पढ़े होगे. यस मैम. देखो, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का भी अपना इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में. यू कैन नॉट स्टॉप दिस ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन. समटाइम्स टॉप मैनेजमेंट को जो बात फॉर्मली नहीं बोलनी होती है, लेकिन उस मैसेज को दे वांट टू स्प्रेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वैसे लोगों को बता देते हैं जो कि जहां से कि मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है. these people there, these are those people which are there in the home also. कि आपको बाकी रिलेटिव्स को बताना है तो उनको बता दो, राइट? you can understand that. तो ऐसा organization में भी होता है. See, organization is made up of people, so where can you, this cannot be also all that behavior. जब OB की तरफ बढ़ोगे तो और मजा आएगा पढ़ने में कि मोटिवेशन डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसीलिए हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ाते हैं. सो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और इसका भी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में होता है. There are certain messages, there are some really important things which need to be disseminated across the organization, but the management doesn't want to take a formal channel to spread that. समझ में आया? This will lead to, जैसे कि और भी चीजें हैं, जैसे कि पनिशमेंट, ओके, जैसे कि रिवॉर्ड, these things.
तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। नाउ एवरी वर्कर, जैसे आप भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो what will happen, that you will also become part of an informal group in the organization. And Elton Mayo has said that a good organization should work towards promoting this kind of group, not restricting it. Third point, merely economic incentives merely economic incentives would not help. Merely economic incentives would not help. His social and psychological needs his social and okay, merely economic incentives would not help. His social and psychological needs and psychological, physiological नहीं लिखना, psychological needs must be satisfied for motivation. Must be satisfied for motivation. This point means, see, at this point you must be thinking कि इतना ज्यादा ताम झाम की क्या जरूरत होती है, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां काम करेंगे, मुझे क्या मतलब है कि वहाँ ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, या ऐसा है, I'll just join the organization for money. You can do this for 1 or 2 years, but after that, when you realize your self-worth, it will be very difficult for you to continue in an organization which does not lay emphasis on human values. For example, आपने ये बात सुनी होगी अपने सीनियर से जो काम करते हैं कि यहाँ पैसा तो अच्छा दे रहा था लेकिन मैनेजमेंट बहुत खराब है। सुना है ये बात? यहाँ पैसा भी अच्छा है लेकिन ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है। ये सुना है? ये सुना है कि यहाँ पे पैसा भी बहुत अच्छा है पर मैनेजर बहुत एब्यूसिव है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Many times. Yes, ma'am. बायजूस, और उसमें सबको बायजूस है या वाइट आर्ट जूनियर है, इन लोगों का वर्क कल्चर खराब है। पीपल दे कैन नॉट कंटिन्यू, वो 1-1.5 साल कोई काम कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। और देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो जिसमें कि टाइमिंग नहीं, हाँ, प्राइवेट बैंक्स, पीपल, गवर्नमेंट बैंक्स में तो द पीपल दे सीक फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, लेकिन वो भी नहीं ही मिलता है। The people who are most happy at their retirement are the people from banks these days. ठीक है, तो वर्क कल्चर इतना ज्यादा है, एक थोड़ा अनएथिकल भी होता है कभी कभी। यू कैन नॉट अचीव दैट टारगेट, यू नीड टू सेल इंश्योरेंस लाइक दैट, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ ब्लफ, जस्ट टू अचीव योर टारगेट। ये एक खराब कल्चर की निशानी होती है, ठीक है। एंड टॉकिंग स्पेशली अबाउट प्राइवेट सेक्टर वेयर यू डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड टाइमिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, you need to sit there and continue working till the manager is working. If you go up and go, they'll be like, how come you go? How come you can go when the manager himself is sitting here? आपने ये देखा होगा। And then you will come up with the logic like, I do have a home, I do have a work-life balance, I do have my family. Okay? तो बहुत लोग, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सिर्फ अनमैरिड लोग काम कर पाते हैं। देयर इज अ रीजन कि मैरिड लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो छोड़ देते हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वर्क कल्चर खराब होता है। अगर तुम रात में 9 बजे जा रहे हो और सुबह फिर 9 बजे ऑफिस में हो, सो दिस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लाइफ टाइम। ओके, वेयर डू यू हैव टाइम फॉर योर लाइफ, वेयर डू यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली? और ऐसी बहुत इस टाइप का प्रैक्टिस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। सो कहने का मतलब है कि तुमको अगर बाकियों से ज्यादा पैसा भी मिल रहा है वैसी ऑर्गेनाइजेशंस में,
तो भी तुम वो उन चीजों को फॉरगो करने की कोशिश करोगे और you will settle down for lesser money where your human value is appreciated more. Okay, ये कहने का मतलब है. There are 3-4 more points. We'll discuss it in the next class and we will continue with this experiment. Gear up for that experiment. पढ़ सकते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा. ये बहुत important experiment है, so I wanted to take a full class to explain that to you. Okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. किसी को कुछ बोलना था? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर मैम वो आइमा वाला क्वेश्चन पेपर है क्या मैम पिछले ईयर का? No, but we'll manage it. It can be managed. Don't worry. हम लोग का कोई एड ऑन कोर्स नहीं होता. Add-on course अभी